A disk without slipping rolls down an inclined surface of vertical height 1000 centimeters. If the disk starts from rest at the top, what is its magnitude of velocity at the bottom of this inclined surface? एक डिस्क है जो कि एक इंक्लाइंड सरफेस के टॉप पर रेस्ट पोजीशन में खड़ा है। अगर ये डिस्क रोल करके नीचे आए तो बॉटम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सो एज गिवन, यहाँ पर यह डिस्क रेस्ट में है, so it has no kinetic energy. The total energy of this disk here at the top is its potential energy. यहाँ इस टॉप पोजीशन पर इस डिस्क की टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है और ये मोशन नहीं कर रहा, सो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। एंड वी आर आल्सो गिवन दैट द सरफेस इज़ फ्रैक्शनलेस, सो हम कंसिडर कर रहे हैं कि फ्रैक्शन की वजह से जो लॉसेस है वो ज़ीरो है। इसकी जो टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो बॉटम पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh. द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क इज गिवन बाय हाफ I omega squared. I is the moment of inertia and omega is the angular velocity. And the translational kinetic energy is given by half mv squared. M is the mass and v is the velocity. Again, mgh is equal to half into I of a disk is given by half mr squared, where m is the mass of the disk and r is the radius of the disk. Omega is given by v by r. We all know this formula, 1 over 2 mv squared. M is cancelled out as it is common in all the terms, and r squared divided by r squared gives us 1. Gh is equal to 1 over 4. 1 over 2 times 1 over 2 gives us 1 over 4 into v squared plus 1 over 2 into v squared. 1 over 4 v squared plus 1 over 2 v squared gives us 3 over 4 v squared. Rearrange this thing for v squared. We get v squared is equal to 4 over 3 gh. To remove this square, we take the square root on both sides. V is equal to 4 over 3 gh under the root. Substituting the values, g is 9.8 meter per second squared. H is 10 meters. The height was 1000 centimeters. Centi is equal to 10 raised to power minus 2. Then this 1000 centimeters become 10 meters. Calculating this thing gives us 11.43 meter per second. अगर ये डिस्क रेस्ट पोजीशन से रोल करके बॉटम की तरफ आए, बॉटम पर इसकी वेलोसिटी 11.43 मीटर पर सेकेंड होगी।